A very good evening to everyone present here. I, Shalja Patil, heartily welcome you all to third day of Web Chronicles into the vortex of web development. During the first 2 days of Web Chronicles, we learned HTML, CSS, Bootstrap, and JS. And today it's time to take on React. Both HTML and CSS are integral to any web development project. If you have these skills already, then learning React should be a relatively straightforward process. It has its own unique set of challenges, but it is an excellent tool to have in order to start your career as a web developer. React.js is one of the most demanding frameworks in the market, but one common mistake that many developers do is directly jumping into it without knowing its prerequisites. And today, GDSC AITR is here to guide you along the pathway of web development to build an attractive portfolio using React.js. For this, I would like to invite Nitin Shukla to take this session ahead. Thank you, Selja. So, hello everyone. Is my screen visible? Yeah, Nitin, Yes, Nitin, it is visible. So, hello everyone. This side Nitin Shukla, and as we all know that today is the day 3 of our bootcamp, and we are going to learn React, and I'm going to take this session. So, what is React basically? Did anyone hear it before? Like, what is React? Like, obviously, I'm not talking about English word React. React in terms of technology. So, did anyone hear it before? Be interactive, guys. I don't want this to be a normal online lecture. So, be interactive. Okay. Okay, it's web dev framework. Nice, nice. Okay. Okay, great, guys. Cool. Great. So, be interactive, guys. Let's start our session, or we can say let's try to interact with React. Okay. So, start our PPT. So, yeah. So in today's lecture, in today's webinar, we are going to cover what is React, why we need to learn React, or what are the core concepts of the React, and like what are the React's props and states, and we will also get some introduction about React hooks, and alongside we will do some practical also. Okay, so yeah. So what is React? React is like basically a JavaScript library which can be used to build a like extensible or scalable UI application. It is basically used to create simple web application which can be like most demanding in the nowadays, most in the most attractive form or most in extensible form we can use. And with the help of React, we can use reusable UI components which we can create and which contains data and changes over the time. Basically, React is a tool, a magic tool, which was created by Facebook, and it helped them to like manage millions and billions of the users. So आपने कभी सोचा होगा कि जैसे हम कभी भी फेसबुक पे कोई सा भी लाइक बटन दबाते हैं या कमेंट का कुछ भी करते हैं, तो वो पेज पूरा रिलोड नहीं होता, सिर्फ वो लाइक बटन ऐड होता है एंड दैट्स ऑल. So ये सब कैसे होता है? Behind this all like React is there. So with the help of this magic tool, they are like making millions and billions. So okay. So basically React is V in MVC. Okay. So what is MVC? So MVC बेसिकली एक आर्किटेक्चरल पैटर्न फॉलो होता है. सो जैसे बड़ी बड़ी जब भी हम कोई से प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में हम जब भी कोई सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, सो एक आर्किटेक्चर होता है, एक फ्रेमवर्क होता है प्री डिफाइंड कि हमें इस वे में प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है और उस वे में कंटिन्यू करना है. सो एमवीसी आखिर होता क्या है? मॉडल, व्यू, कंट्रोलर. सो व्हाट इज मॉडल? मॉडल में बेसिकली क्या रहता है कि जो भी हमारे डाटाबेस और डाटाबेस डिजाइन वाली चीजें रहती हैं वो सारी आ जाती हैं हमारी मॉडल्स में. एंड व्यूज में क्या रहता है? जो भी हमारा फ्रंट एंड पार्ट रहता है वेब एप्लीकेशन का, कि हमारी वेब एप्लीकेशन दिखेगी कैसे, तो वो पार्ट आता है हमारा व्यू पार्ट में. एंड इन कंट्रोलर we basically creates all the controls, or the routing things are done in the controller. So React basically manages the V part in the MVC, like view part, and it is responsible for this. So why React? Why we need to learn this React? ठीक है भैया, आपने बता दिया React ये होता है, बट हम सीखे क्यों? मतलब क्या एडवांटेज मिलेगा इससे हमें? सो एडवांटेज इससे ये मिलेगा यार कि देखो नेक्स्ट आज आखिर React यूज कौन कर रहा है?
तो अगर हम देखें कि अराउंड फॉर्च्यून 500 कंपनीज को हम देखें कि who are using React. So like Apple, Adobe, many products of Microsoft are built using React. Amazon, some products, and like Netflix and all these major American companies and like Fortune 500, majority of them are using React. And if you want to work in there and you can learn React. So let me show you some trends about the React. React is the most popular framework for the developing the front end part of the application, and it is like number one, and behind this nobody is there, no framework. So React is the most popular and most in demand technology of the industry. So as a fact, an average salary which is offered to a React developer in the United States is $120,000. You can imagine that amount, and it is React has a huge community supports around. It has 181K, yani 1,081 stars are on the React JS GitHub repo. Okay, so you can imagine like it is supported by a huge community. And in the recent Stack Overflow survey, 1 out of 4 developers are preferring React to work on, or most loved framework or React JS. Okay, so ठीक है. So what are the advantages of React? कि क्या advantages हैं React को सीखने के? So basically क्या React advantages provide करता है? So first thing is its performance. Its performance is like brilliant. It can we can create scalable products, and it renders very fast, and it helps in creating the big web applications. And simplicity, it is very easy to learn, and we can easily create and application, and it is very easy to learn and beginner friendly as well as developer friendly also. And it has component power. So what are this component? We will learn about in few minutes. And component basically is a part, or we can divide the whole UI into the small components. So it's like a divide and rule kind of policy. And speed. So React app is generally very fast, and they are very SEO friendly as well, search engine optimization friendly. And next is testability. So React, with the help of React.js, it is very easy to test our web application. Like whenever we create up some business or big application, like it is very important to test this application, and React is very helpful in such kind of environment. And next thing is most important for us, it is very easy to learn and beginner friendly. Okay, so now we are going to learn about React.js core concepts. Okay, so what is DOM and virtual DOM? Okay, so जैसे कल हमने सेशन हमारा था सेशन जावास्क्रिप्ट के ऊपर. तो जावास्क्रिप्ट में सब आपने पढ़ा कि एक जो भी हमारा एक ब्राउजर की विंडो होती है, वो एक तरह से पूरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है. ठीक है, और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में प्रॉब्लम क्या रहती है कि जो भी हमारा HTML DOM होता है, जो भी हम ब्राउजर पे देख रहे हैं, तो वो एक तरह से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल रहता है. एंड इट इज लाइक दे आर बेसिकली डिफरेंट नोट्स इन सर्च की, जिसमें हम एक नोट्स में भी चेंजेस करते हैं HTML DOM के अंदर, तो वो पूरा पेज उसको री रेंडर करना पड़ता है बेसिकली. तो इसमें क्या रहता है कि नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ जाते हैं. किसी भी हम कोई सा भी एक माइनर सा भी चेंजेस कर रहे हैं, और उसके वजह से पूरा वेब एप्लीकेशन फिर से रिलोड होना पड़ता है. इमेजिन करिए जैसे अगर आप फेसबुक पे अगर आप लाइक बटन दबा रहे हैं या कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, हर टाइम वो रिलोड हो रही है. Isn't this hectic? So the issue with the DOM is that it is bloated. Okay, so to counter this problem, virtual DOM, React come with the virtual DOM. So वर्चुअल डॉम क्या रहता है? वर्चुअल डॉम बेसिकली क्या रहता है कि एक HTML जो भी हमारा स्ट्रक्चर जो था पहले वाला, ओके, सो उसको हम क्या कर रहे हैं कि वर्चुअल डॉम उसी के जैसा सिमिलर, काइंड ऑफ सिमिलर, हम एक वैसा ही आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं. और जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट पे जहां चेंज हो रहा है, इसमें 2 प्रॉपर्टीज हम करते हैं. 2 वर्चुअल डॉम बनते हैं रियल डॉम्स के. एक बनता है विदाउट अपडेट वाला, और एक बनता है अपडेट वाला. ठीक है, सो विदाउट अपडेट वाले में क्या रहता है कि जो चेंज नहीं हुआ रहता है, ठीक है, हाँ ओके, उसको वो वैसे ही रहने देता है. जो अपडेट किया रहता है तो उसको वो वर्चुअल डॉम में नए वाले में अपडेट कर देता है. देन वर्चुअल डॉम लुक की प्रीवियस वाले जो HTML डॉम था उससे वो क्या डिफरेंस है, और वो सिर्फ उसी पार्ट को चेंज करता है. सो दिस मेक्स द रिएक्ट वेरी फास्ट बिकॉज इट इज यूजिंग वर्चुअल डॉम. So one of the main concepts of React is that component.
लाइक बचपन में हमने एक गेम खेला होगा जिसकी मैंने इधर पिक्चर भी लगाई है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला, या आपने देखा होगा ये सब। तो हम कोई सा भी अगर एक ब्लॉक बनाना रहता है तो बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो हम एक छोटे छोटे ब्लॉक्स को ऐड करके उस वे में जोड़ के एक टॉय एप्लीकेशन या एक टॉय काइंड ऑफ बनाते थे। ओके, सो उसी वे में एक जो बड़ी सी वेब एप्लीकेशन रहती है उसमें भी बहुत सारे छोटे 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 कंपोनेंट्स रहते हैं जो हम बनाते हैं, और इससे हमारा टास्क बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, सो लाइक हमें अगर एक वॉल बनानी है तो वॉल में कैसे छोटे छोटे ब्रिक्स हम लगाते हैं, बहुत सारे ब्रिक्स से वॉल बनती है। इन सच वे, इन सिमिलर वे, लाइक React is formed by the components, and it is like a heart and the soul of the React. Like here we can imagine like there is a, it is a web application. Okay, so the starting में हमारा एक नया बार का एक component में एक लेफ्ट साइड कंपोनेंट हो सकता है, एंड ये राइट साइड कंपोनेंट, कार्ड कंपोनेंट। सो लाइक बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स। ओके, सो okay, what is so components, ठीक है, होता है, but what is actually component? So basically component is like a some part of the code, like which help us to create UI, reusable UI. Like one, we can create one component, we can, and then we can use at different places. Okay, so it is like a building blocks of a web application. So there are two types of a component. Okay, then stateful component and stateless component. We will see later what is state, but like stateful components and stateless, the basic difference is that in stateful components there is a state, okay, which contains some data, and in stateless component there is like no state such thing is there in stateless component, and there is no thing. Okay, so basically React में आज के दो वर्जन थे, अराउंड 60 वर्जन से पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट काफी यूज किया जाता था, बट इन मॉडर्न डेज वी आर करंटली लाइक यूजिंग फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स। सो डिफरेंस इसमें ये रहता था कि इनके जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में हम जनरली क्लास को यूज करते थे किसी भी फॉर्म को रेंडर करने के लिए। सो वो बेसिकली थोड़ा सा हैक्टिक और थोड़ा सा बड़ा कोड होता था, बट इन फंक्शनल कंपोनेंट्स वी आर लाइक very easy to use and it is very easy to learn. So functional based components, and आज के वेबिनार में भी हम functional based components को ही देखेंगे। Okay, so एक बेसिक सिंटैक्स ये डिफरेंस रहता है कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में इस तरह, जैसे क्लास हेडिंग एक्सटेंड्स रिएक्ट कंपोनेंट एंड दिस react this way it renders, and in functional based components like there is a heading, or like in such way it perform. Okay, so life cycle of component. What is life cycle of component? Life cycle of component वो होता है कि जब भी हम component create करते हैं वहां से कंपोनेंट के एंड तक, लाइक होल लाइफ जर्नी ऑफ अ कंपोनेंट। सो देयर आर बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स: इनिशियलाइजेशन, माउंटिंग, अपडेटिंग एंड एरर हैंडलिंग। सो इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, जब भी हम जब भी हम कोई सा कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, सो जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है इनिशियलाइजेशन की। ओके, एंड नेक्स्ट इज माउंटिंग, लाइक whenever we try to update or change the state of the React components, so it comes under the mounting. And like unmounting, there is a unmounting thing, like in which we degrade or delete the component. And the fourth part is the error handling, like if some components facing a issue in handling, like in rendering the component, then we will use the error handling. So there are basically four parts of the life cycle, four parts in life cycle. So basically JSX क्या होता है? फिर अपन ने अभी पढ़ा कि कंपोनेंट्स, ठीक है, बनाते हैं अपन रिएक्ट एप्लीकेशन में। सो कंपोनेंट्स के अंदर जो कोड लिखते हैं हम, वो नॉर्मल HTML CSS नहीं रहता, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ JSX. इट इज काइंड ऑफ अ लैंग्वेज विच इज वेरी सिमिलर टू HTML. सो JSX प्री प्रोसेसर के तरह वर्क करती है, एंड लाइक it gives us the power to use HTML and JavaScript both simultaneously in the same code. Okay, so this power comes from the JSX. और ये power कैसे आती है? ये power हमें provide करता है Babel. So Babel क्या होता है? So basically Babel is like a transpiler which converts our JSX code into a pure JavaScript code. Okay, so we can go to the some website like babel.jss. Here like it is a compiler for JSX to JS code. Okay, we will see here. Okay, yeah, like
Yeah, here we suppose written like HTML. It is very similar like HTML code. Here, hello. What? Okay, here is a simple HTML. You will तुम्हें लगेगा कि ये HTML कोड है, but this is a JSX code. Okay, इसमें हम JavaScript के और भी चीजें ऐड करेंगे, then it will look like a JSX code. But for now, I'm just like writing simple HTML code. So ये एक JSX कोड को Babel compiler क्या कर रहा है कि इसको pure JavaScript में ब्राउजर को दिखा रहा है. So this power comes from the Babel. Okay, so if we create some object like this. Okay, here it is the JavaScript thing, and below under this, these are all the HTML code. So this thing whole gets compiled into this. So that's power come from the Babel. So Babel is very helpful for us in React. Okay, so basically there are the two ways in which it converts the code. The first method is the create React element. Okay, and second is the append method. Append method and create element are the two methods from which gets converted from JSX code to JS code. Okay, so 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 now it's time to get our hand dirty. So let's try to do some work on the React. Okay, so for starting, we need two things like Node.js and React Node.js setup. So before working on React, we need to install Node.js. Okay, so for installing Node.js, we need to go on Node.js official website. Okay, and here you need to download. Here you need to download the long-term support version of the Node.js. Like there are the two versions are there, like long-term support and the current version. Basically, current version is in the beta phase testing, so it is not advisable to use this. I will recommend like it is recommended for most of the users. So we need to download LTS version, and depending upon your operating system, you can download all this like whether it is depending on your operating system. So my operating system is Windows, and here we there is Windows installer MSI package. So we need to install depending upon the 32-bit or the 64-bit, depending on your system type. And we can look into our system type by going to the properties section. Yeah, here we can see the properties. Okay, yeah, here system type. It is a 64. My system type is 64-bit operating system. So yeah, you can check and download according to this. So so on clicking on 64-bit, our package gets downloaded. Okay, and once it gets downloaded, you need to install it, and you need to install it with all the default settings. Okay, so you need okay, I will also paste this link in the chat section. So all you need to go and download there. And after installing this, we can check whether our Node.js get installed or not. And we can check this by going to the command prompt, and the command for checking the whether our Node.js get installed or not, the command is node-v. Okay, node-v. After executing the command, if this version appears like version 16.3.1, so then like this is the node version, our node version, and it's इससे मालूम पड़ जाएगा कि हमारा Node.js install हुआ है कि नहीं. So yeah, the command for I will also paste it in the chat section. You need to check. You need to run this command to check whether our Node.js get installed or not. So if you have installed Node.js in your computer, like in your laptop, after installing it, please write cool in the chat section. So मुझे मालूम पड़ जाएगा कितने लोगों का इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, या ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या अभी इंस्टॉल कर रहे हैं. तो इंस्टॉल होने के बाद cool कमेंट करना चैट में. So fast guys, great. Okay, like you can also ask question in the midwest, like if you have any doubt in the components or the JSX code, so you can also ask in the middle.
No, basically Node.js, like we are installing Node.js for the package manager. Like we need npm package manager, and for npm package manager, we need Node.js to be installed in our laptop. And React is a different thing, and like React is a JavaScript library which is used to uh, create different. Which is used to web application, which is used to front part of the web application. Okay, so what was the command to check? The command is already I have pasted in this. Okay, so the command to check is -v. Is Node.js server always necessary to work with React? Yeah, Node.js server is necessary to work with React. So okay, you all the like some guys have installed. If you have faced any difficulty like installing it, you can go to the online sandbox, like a code sandbox, which is an online ID where you can practice the React. Like this is the editor. I will also place this link. Okay, so here you can also go and practice there. Like if you are facing some issues like net issue, or if you have some issue, you can go there and like work on there. Like on going sandbox, you need to sign in, and after sign in, or okay, or you can directly like go on and start working on the React. You can create the sandbox button here, and with the help of like here there are the different templates are available, like React template or different things. So after selecting the React, here you can like your online ID will be open, so you can also work out there if you are not like if your system facing some issues in installing React. Okay, so after installing this, now our next task is to uh, create React app. Like we need to install the React. Okay, so for creating the React app, we need to navigate to the location of the folder. Okay, so we need to like navigate to the, suppose I am going to desktop, and here you can run the command. Like command for creating the React is npx create dash react dash app, and here your folder app name comes like my first application. Okay. So after creating this command, so you need to like run this command. I'm also pasting it in the chat section. Code Sandbox is the online ID where you can practice your React code. If I will advise, like you will to work on the local system, but if some issues are there, then you can work on the Code Sandbox as well. Okay, npx React. You need to navigate to the location, and you need to run this command. Okay, so after running this command, like it will take around 2 to 3 minutes to run this command. Like it is creating, process has started. Sir, but okay, Pratham, we are like starting in like after start इसको install करने के बाद हम code start करेंगे इसका ना. Till now like हमें install करना है React को, and जिसको कुछ issue आ रहा है वो code sandbox में जा सकता, code sandbox पे भी practice कर सकता है, which is very fast online ID. Okay, so after after creating React installation, our platform is all set to write our code. Okay, so now we come to the project structure. Like I have I have run this command npx create react app, my app, and after creating this app some magic happens. इसको कमांड को रन करने के बाद कुछ मैजिक हैपेंस होता है, और क्या होता है कि हमारे जहाँ पे भी हमने जिस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में गया है वहां पे जाके एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है, एंड जिसमें बहुत सारी पहले से ही फाइल्स रहती हैं. ठीक है, कुछ इस प्रकार का एक फोल्डर स्ट्रक्चर्स आएगा आपके सामने. ठीक है, इसको VS कोड में ओपन करना है अपने को. ओके,
सो आवर फाइल इज गेटिंग ओपन। तब तक मैं बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें रहता है, जो भी पैकेजेस आएंगे, ठीक है, जो भी प्री इंस्टॉल डिपेंडेंसीज रहेंगी वो इस फोल्डर में क्या क्या आई हैं, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज द नोड मॉड्यूल्स। सो व्हाट इज द नोड मॉड्यूल्स? बेसिकली नोड मॉड्यूल्स क्या रहता है कि जितने भी हम जो भी हमें रिएक्ट कोड को करने के लिए जितनी भी हमें चीजें चाहिए पहले से, तो वो सारी चीजें, सारे पैकेजेस पहले से ही आ जाएंगे नोड मॉड्यूल्स में। So with the help of this command, okay, in public folder there is two things. There are two files are present in the public folder. The first file is html index.html, and the second file is style.css. Okay, so और जो भी हमारा एक नेक्स्ट फोल्डर आपको दिख रहा होगा एसआरसी फोल्डर का, और एसआरसी फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, जैसे app.css, app.js, ओके, index.js, ओके, एंड डिफरेंट फाइल्स प्रेजेंट है। तो इसमें काम क्या रहता है कि ये सब ज्यादा फाइल्स काम की नहीं है। मेनली वी नीड टू फोकस ऑन टू फाइल्स, app.js और index.js and app.css, okay. css is basically for the styling our react app, okay, and index.js is the entry point from where our web application starts. So index.js file is very important. It is like a entry point for our web application, okay. So next, app.js is like our default component which is created, and like whatever the operations or whatever the things we like execute or create, it will get run through from the app.js. Like by default, index.js is currently rendering app.js. So yeah, and there is another file like package.log.json and package.json. So package.json, we first look to the package.json. Here basically all the dependencies which are installed, which gets installed in our React are will be mentioned like along with the versions are like ये इसमें पूरा एक इंफॉर्मेशन आपको प्रेजेंट रहता है, जितने भी हमारे पास पैकेजेस हैं उनके वर्जन्स प्रेजेंट रहते हैं, वो सभी इंफॉर्मेशन हमें package.json से मिल जाती है। एंड पैकेज लॉग डॉट जेसन हमें उस पैकेजेस के वर्जन्स को हेल्प करने में मदद करता है जब भी हम कोड शेयर करते हैं या जब भी ट्रांसफर करते हैं। सो पैकेज लॉग डॉट जेसन की तरह से वर्जन को मैनेज करता है डिफरेंट पैकेजेस के बीच में, ओके। सो देखते हैं हमारा रिएक्ट ऐप क्रिएट हुआ है कि नहीं। तब तक हम अभी आई थिंक इट्स टेक लाइक इट इज टेकिंग सम टाइम। सो तब तक हम Q&A में कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, like if you have any doubts like regarding component or anything, like if you are facing any issues in installing Node.js or React, you can comment out and you can comment in the chat section. Okay, so सभी के कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया कंप्यूटर Node.js? Okay, so React is basically a JavaScript library which we use to create the front-end applications, and like React में बहुत सारे reusable components रहते हैं जिसके मदद से हम create करते हैं। What if I want to work on JavaScript? Yeah, you can work with along with the TypeScript also, but JavaScript is the more preferable. Like you can also work with the TypeScript. It is compatible with the TypeScript also. Why do we use this command? Okay, we use this command to create the app. Like जो भी हम like React की application को create करने के लिए हम करते हैं, like जो भी pre default application हमारे पास बन के आती है इस command से. Okay, okay, yeah. Like no, like for basically styling, there is no alternative. Like we have to use CSS. Different frameworks available like Bootstrap or Tailwind CSS. Different things are available. So yeah, CSS is mandatory for styling. So till it's get started, without wasting our time, I will also work in the code sandbox. Like it is taking some time. Okay, so yeah. बाय डिफॉल्ट जब भी हम एक लाइक कोड सैंडबॉक्स एंड उधर का सेम रहता है फंक्शंस, ओके। सो आई विल एडवाइस कि VS कोड पे करो, बट अभी मेरे कंप्यूटर में थोड़ा सा वो टाइम ले रहा है, सो वी विल लाइक स्टार्ट वर्किंग ऑन द कोड सैंडबॉक्स, ओके। सो या इन कोड सैंडबॉक्स ये हमारे पास एक जैसे मैंने बताया एक index.js एक एंट्री पॉइंट रहता है, ठीक है। एंट्री पॉइंट रहता है जहाँ पे एक एलिमेंट रेंडर हो रहा है इधर रूट, ओके। सो ये एलिमेंट रूट कहाँ से आया, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं। बेसिकली जब भी हम पब्लिक फोल्डर जो भी आपके सामने बना है, ठीक है, इसमें एक फाइल है आपके सामने आई होगी, ये वाली, आई थिंक दिस,
या ये वाली ये कमेंट सेक्शन को आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो. दिस आर लाइक नो दिस सम जो भी टैग्स हैं उनको आप हटा सकते हो. कुछ टैग्स को कमेंट आउट सेक्शन को लाइक थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको. हाँ, सो इधर एक टैग दिख रहा होगा आपको, रूट टैग. ठीक है, ये रूट टैग क्या होता है? ये बेसिकली बताता है एक लाइक दिस ऑल आर इन द रूट टैग. लाइक ये बताता है index.js को कि यार ये एक एंट्री पॉइंट है रूट. ठीक है, इधर से आपको क्या करना है, रेंडर करना है कंपोनेंट्स को. ठीक है, and next thing is app.js. App.js is basically like JSX code are written in this, so it is an app component which are calling inside like index.js. इधर हम कॉल कर रहे हैं, देखिए app component को कॉल कर रहे हैं. ठीक है, इसमें कॉलिंग के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाली चीज इस्तेमाल करते हैं. हम उसको देखते हैं साइड बाय साइड. ठीक है, सो हम आज इस प्रोजेक्ट में साइड बाय साइड हम एक प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं. सो एक स्मॉल प्रोजेक्ट है, कीपर ऐप. ओके, इट्स अ काइंड ऑफ अ टू डू ऐप और नोट्स टेकिंग ऐप. सो वी विल ट्राई टू मेक दिस आल्सो. ओके, so first thing is okay, like in this UI you can see that like there are three mainly section. First section is the header section, like this yellow part. Okay, second section is this body part and the card component. Okay, and the next thing is uh, the footer component where it is written like copyright at the rate method. Okay, so we need to create this UI part. Okay, so how can we create this? So there are three components, different components, and we will try to create. Okay, so there is a like we can create a folder name components. Okay, in components we can create three different files. Like first file is the header .jsx. Okay, like the extension here I am using like जो भी फाइल रहेगी उसका एक्सटेंशन हम .jsx एंड से एंड कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हम कोड इसमें लिख रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट XML कोड रहेगा. like it is very similar to JS, but like there is a argument between JSX and JS. Both things work, but we are here using JSX. Okay, so before starting, like we can create three components. First is node.jsx. Okay, and third is the footer.jsx. Okay, so in header, like we can create इन हेडर में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो भी हम एक कमांड रन करनी है, हमें फाइल पहले स्टार्टिंग में एक इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट. ओके, सो कोड सैंडबॉक्स में ये पहले से ही डिपेंडेंसी आ जाती है. पैकेज.json में आप देखेंगे तो इसमें पहले से ही 3 डिपेंडेंसीज रहेंगी. आप उनको इस कॉलम को देखना है. ठीक है, लाइन नंबर 8 में, तो इसमें पहले से ही प्री डिफाइन कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल आई हैं, जैसे कि रिएक्ट डॉम और रिएक्ट स्क्रिप्ट्स. सो इसमें से दो हमारे काम की हैं, रिएक्ट डॉम एंड रिएक्ट. ओके, एंड जैसे जैसे हम अलग अलग पैकेजेस इंस्टॉल करते जाएंगे उधर वैसे वैसे डिपेंडेंसीज बढ़ती जाएंगी. ठीक है, सो ओके, सो like on working on React, we need to first import it React in this way, and here we need to like create here we need to create like components. So here I am using like a function. Okay, we create the function header. Okay, in this way, and from this we can return header. Okay, and here we can write like keeper app. And we can like we need to export this also. So जो भी हमने इधर मॉड्यूल्स बनाए हैं इसको हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है. ठीक है, तो हम एक्सपोर्ट के लिए क्या करते हैं कि एक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इधर और भी कोई फंक्शंस प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ यही प्रेजेंट है, एंड डिफॉल्ट में हम उसको ही पास करना चाहते हैं. सो इधर हमने डिफॉल्ट में हेडर को पास कर दिया. ठीक है, एंड app.js में हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉल करना पड़ेगा. ठीक है, सो ये बेसिकली हमारा एक तरह से चाइल्ड कंपोनेंट है ना, एंड वी आर calling in our parent component. Okay, here parent component is our app. Okay, so here we are importing this. Okay, उधर से वो export हुआ, हमें import कराना पड़ेगा उसको. ठीक है, so here we are importing like
import header from component slash our path directory. Okay, so we need to import this header and we need to call this. Okay, we can call easily like after creating this. Okay, so after calling this header keep like it appears here. Okay, so इस वे में हमारे कंपोनेंट्स वर्क करते हैं. ठीक है, सो हम इस ऐसा यूआई बनाने के लिए हमें स्टाइल शीट्स की भी जरूरत पड़ेगी. एंड हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट लाइक style sheet also. So style dot css. Okay, and here in HTML we need to add, I think yeah, we need to add this link. It is not sheet. Okay, and we need to add this in this way. And yeah, for the styling part, I'm going to share you the link of like a styling sheet, so you can go there and copy the style code. Like I will request someone from the team, please paste the link of the CSS which I have shared in the Word file. How should I code on Node.js? Look, Node.js में हम कोड नहीं कर रहे हैं. Basically Node.js हम एक इंस्टॉल कर रहे हैं जिसकी मदद से हम npm के थ्रू पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे. ओके, या आई विल ठीक है, मैं स्लो ट्राई करूंगा. ओके, and like someone please paste the code from the style sheet. Okay, just 1 second. This is the link for the style sheets. Okay, so we are not going to waste our time in styling, so we will directly learn our React concepts. है ना, हम styling पे इतना ध्यान नहीं देंगे. Okay, so yes sir, then where to code? Like you can code on code sandbox as well, or on the node VS code as well. Okay, yeah, you can go from here and like copy all the style sheets. Like here I have already added things. Okay, so this way you need to copy this, and in style sheets you need to paste this in such way. And after creating this, like to save, and yeah, in header you need to like import style sheet as well. Okay, so for adding style sheets we need to like in do in this way. Okay, so yeah, like this kind of UI appears in front of you. Yeah, actually I'm not wasting time in styling, so you can like आप लोग अपनी creativity और दिखा सकते हैं. ठीक है, so yeah, our header component is ready. Now it's time to make our footer component. Okay, so import React. The same thing here we will do also. Like we will copy this and we'll paste. Okay, so जिसका लैग हो गया है, कभी मतलब पीछे छूट गए हैं, वो इस वे में एक और कर सकते हैं. ठीक है, हम इधर एक फुटर कंपोनेंट बना रहे हैं जैसे हमने हेडर कंपोनेंट बनाया था. ठीक है, एंड here we are using footer, and yeah, in this way we can add footer as well. Like okay, we need to make some changes. Footer, we can also add copyright in the add section, and here we can also use
JSX code, like JavaScript code. This is the beauty of the JSX. We can simultaneously use both React, both HTML code as well as JS code. Okay. So this is the JavaScript function to get look to time. So, like we need to call this, like it will give us the dynamically typed year. Okay, so we need to use okay, there's some issue. Okay, there's some typos. Okay, there's some spelling mistake in this. Okay. ओके या ये हमारा फुटर कंपोनेंट रेडी हो गया है, ठीक है। हम अब इसे हमें इंपोर्ट कराना है। कहाँ इंपोर्ट कराना है? हमें इसे एफ फाइल में इंपोर्ट कराना है, ठीक है, app.js में। सो इन फुटर कंपोनेंट लाइक वी कैन import, like write this in way it is showing error like footer is not defined। तो footer क्यों नहीं डिफाइंड है? क्योंकि हमने इसे अभी तक इंपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। तो हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो footer from like components and here you can add footer। okay, so हमारा footer आ गया, like it is compiling, like it is taking some time। yeah here copyright tax is here। okay, so like we can edit this copyright DSC। okay, yeah, in node component we can like also create in the same way different components, like in creating for node we can in style sheets there is footer node component। okay, yeah, in for node like we need to for card component like we want this thing, like in this thing we need to create the card component। okay, so basically for creating the card component here in this way we can use like इधर देखना गाइस, इधर जो हमारा HTML कोड रहता था जो नॉर्मल वाला, ठीक है, उसमें हम क्या करते थे कि क्लास ऐड करते थे, ठीक है। वो क्लास एक तरह से यूज किए जाते थे अपन CSS को ऐड करने के लिए, बट इन रिएक्ट और इन JSX कोड हम इस क्लास को क्लास नेम की तरफ इसको रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये वाली एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। सो हाँ, दिस वे में हमारा वी कैन क्रिएट दिस नोट पार्ट। ओके, एंड हियर we can like just 1 second guys। okay, in this way we can create like components here we can use in such way, in similar way we can create node components like title or in bottom we can add comment, okay, comment or text, title and content। okay, so we create this node application, okay, node component, and we need to pass in our app.js। okay, so we need to pass the node here like and we need to import this also, so from node like in this way we have created the title and
टाइटल एंड कंटेंट थिंग। ओके, सो इस वे में हमने अभी तक कर लिया है, और अगर किसी का लैग हो गया है तो मतलब आई थिंक ट्राई कर सकते हैं, एंड वी विल टेक सम क्वेश्चन आंसर टिल देन। ओके Nitin, या sorry to disturb you. You should plug on the laptop. सॉरी, Plug in the laptop. ओके ओके या if you have any doubts you can post it in the comment section. ओके, सो अभी तक इधर तक सभी का हो गया कि like you can also I will share my code sandbox well, cmd installation is done. Okay, nice. Okay, React app ka. Okay, nice. Like you can also I will share this code as well with you, so you can like refer this code as well if you get stuck somewhere, or if you got lag. Okay, so yes, same HTML tag we can use here. Yeah, like it is basically जो भी हम HTML कोड लिखते हैं उसी फॉर्म में हम इधर भी लिख सकते हैं। बेसिकली एक तरह से HTML कोड है, JSX में जितने भी कोड रहते हैं HTML कोड रहते हैं, और उसके साथ साथ हमें जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस एंड लाइक जावास्क्रिप्ट के फीचर्स भी यूज कर सकते हैं। Please explain. Look, no, we can't explain everything from the start. Like, हम इसकी recording session available करा देंगे session होने के बाद, so you can refer this. You can see where I will see the output. You can see the output on the browser window. Like whatever the code you type, you can see in the browser. Okay. Like this is my code sandbox. This project. Okay, you can refer this if you. प्लीज एक्सप्लेन क्लास नेम। क्लास नेम एक्चुअली एक तरह से जैसे हम जो स्टाइल शीट्स में क्लास ऐड करते थे, ओके, एचटीएमएल कोड में क्लास ऐड करते थे अपन स्टाइल शीट्स के लिए, इन सिमिलर वे वी यूज क्लास नेम फॉर एडिंग स्टाइल शीट्स इन द कंपोनेंट्स। ओके, सो क्लास नेम like in VS Code, in VS Code you need to like जब भी जो भी आपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, ठीक है, उसके बाद तुमको उस फाइल में जाके उस उधर सीडी करना है उस प्रोजेक्ट को, एंड देन लाइक इफ योर ऐप इज लाइक you have named your app like cd my app, then you need to run npm start. Okay, so after starting a server will run and it will like a browser, new browser window will open, so आप उस पे जाके चेक कर सकते हैं जो भी आपका आउटपुट कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट अगले पार्ट पर। सो अभी तक हमारा इतना कोड हो गया है, ठीक है। सो या हमने अभी तक दिस पार्ट कीपर ऐप का ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, और हमारा ऐप अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, which is very similar to this, or in fact it is better like what I have pasted in the, it is like looking like this. Okay, so next we will move to the next part of like next core concept of the React, so which is the React properties. So basically what is properties? रिएक्ट में क्या रहता है कि दो कंपोनेंट रहता है, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बताया कि एक बेसिकली एक पेरेंट कंपोनेंट रहता है और एक चाइल्ड कंपोनेंट रहता है। सो बेसिकली वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के, सो इस वे में वो कम्युनिकेट करते हैं प्रॉप्स की मदद से। लाइक पेरेंट को जब भी कोई सी चीज चाहिए रहती है, वो प्रॉप्स के थ्रू, चाइल्ड कंपोनेंट को कोई सी भी चीज चाहिए रहती है तो वो पेरेंट्स के थ्रू पास होती है प्रॉप्स के मदद से। एंड इफ लाइक चाइल्ड कंपोनेंट को कोई सी पेरेंट कंपोनेंट्स को पास करना है, तो देन इट like it is possible with the help of events. Okay, so props are basically used to pass parent data from parent component to child component. Okay, so props are basically जो भी इनका यूज रहता है like they are very equivalent to a parameter kind of thing, like अपन ने C++ में इस्तेमाल किया है एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस में, कि जो भी आर्गुमेंट्स के बीच में हम पास करते हैं, ठीक है,
कुछ वैल्यूज पास करते हैं, उसी सेम वे में रिएक्ट में प्रॉप्स की मदद से हम पास करते हैं वैल्यू, ठीक है. वी विल लुक लाइक हियर in component like in a props component, like there is a some component welcome, and here we are passing the name is equal to Sarah. Okay, so yeah, we are passing the name is equal to name Sarah. Okay, and here we are like here we are taking the parameters. Okay, like we are inputting the argument, and from here we access the like props dot name. Okay, so they are basically used to get the custom data to our component. Okay, so in this way our props work. So now our next task is to एडिंग प्रॉप्स टू आवर प्रोजेक्ट. ओके, सो हम अब ऐसा कुछ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, ठीक है. सो आप बोलोगे कि भैया सेम ही तो है, बस 4 कंपोनेंट और क्रिएट कर दो काट के, बट हम उस वे में नहीं जाएंगे. हम एक ही कंपोनेंट करेंगे एंड उस एक कंपोनेंट में हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज पास करेंगे जिसके थ्रू वो कंपोनेंट क्रिएट होगा, ठीक है. राइट, सो लेट्स कोड. ओके, ओके, देयर आर सम. ओके, so yeah, here you can like go to the node.jsx file. Okay, we need some, like I will paste the link. Okay, so you can go there and like copy the things. Okay, I'm sharing the someone from the team, please share the node.js link, node.js file link. Someone from the team, please share in the comment section. Till then we will come. ठीक है, अब हमें एक SRC में हम एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका हम नाम रखते हैं node.js. अब इससे हम क्या कर रहे हैं कि हमें मल्टीपल कंपोनेंट्स को कॉल करना है, ठीक है. हम अब इधर चाहते हैं कि एक मैप फंक्शन लगाएं और जिसके थ्रू डिफरेंट चीजें कॉल हो जाएं, ठीक है. सो या, हियर इज आवर node.js फाइल. इस फाइल को आप लोग क्या करना है, कॉपी करना है, ठीक है. एंड you need to like you need to copy this. Okay, and you need to paste in there. Okay, yeah, you need to create this file and you need to paste, and here our node.js. Okay, so yes, इधर हमने node.js फाइल बनाई है. अब हमें क्या करना है कि जितने भी पैरामीटर्स है, ठीक है, ये एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, इसे हमें कॉल करना है एंड इसको हमें कंपोनेंट्स में पास करना है, ठीक है. अब मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि प्रॉप्स को हम यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है. जैसे हम एक नोट है, ठीक है, हम इधर पास कर रहा हूँ मैं. जैसे अब ये टाइटल एंड कंटेंट ये डायनेमिकली टाइप करके आए हैं, ठीक है. हमने मतलब सॉरी स्टैटिकली टाइप किया है हमने, ठीक है, अपने नोट कंपोनेंट में. here like title and content. I want this कि ये like dynamically render हो, ठीक है. So इधर मैं argument पास कर रहा हूँ, props को पास कर रहा हूँ. कैसे पास कर रहा हूँ मैं, ठीक है. इधर मैं title is equal to like I can here like write day 1. Okay, yeah, sorry, day 3. Okay, and here I can pass like content, and like here I can like write this thing like day 3, and here we can like yeah, here react. Okay, so in this way we can try to pass the props, and we need to collect the props. So for collecting the props we need we need to pass props here. Like we have to declare, like here we can write any name. Okay, so I'm writing props. Okay, और इधर props के लिए क्या करना है कि इधर हमें props dot name. Okay, props dot name, sorry, props dot title, जो भी हमने उधर नाम दिया है हमें सेम उसी को कॉल करना है, ठीक है. एंड props dot content. Okay, yeah,
इन दिस वे लाइक हमने इधर props डॉट टाइटल, मैंने अभी कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि इधर डे 3 ऑन रिएक्ट, ये डायरेक्ट आ रहा है पैरामीटर्स के रूप में नोट कंपोनेंट में. सो इन दिस वे आवर लाइक दिस थिंग वर्क्स, properties. Okay, so now our next task is to like I will also teach some about map function. Okay, so props में किसी को अभी तक डाउट है तो you can ask in the chat section. Like anybody have doubt in chats in props? लाइक बेसिकली प्रॉप्स इन शॉर्ट हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक आर्ग्यूमेंट्स को पास करने की एक मेथड होती है कि हम कैसे पास कर रहे हैं एंड कैन देन कैसे हम उसको कर रहे हैं, how to view if we're doing in VS Code. Like you can run the command in npm start, like you can navigate to your folder like project directory structure, like cd your app name. Okay, then after this you can run the command npm start. Okay, in this way you can yeah, हाँ in cmd आपको रन करना है या इन कमांड प्रॉम्प्ट. सो ठीक है, हम तब तक प्रॉप्स में ये वाला लाइक यू नीड टू गो टू दैट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. ओके, जैसे सपोज आपका आपने एक फाइल नेम क्रिएट किया npm my app नाम से, तो आपको उस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में जाना है, लाइक cd my app, देन यू नीड टू स्टार्ट npm start in such way. So yeah, we need something this kind of thing, so we will like look into our project. Okay, so here we need to import something like import node from node.js. ठीक है, हम इस वाली फाइल, जो ये वाली फाइल है हमारी, है ना, इससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, एंड इधर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं एज ए नोट फॉर्म में. ठीक है, ये नोट्स आ रहे हैं. ठीक है, नोट्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, इधर से एंड ओके, सो yeah, here we are now it's time to call our like node component. Here हम इसमें चाहते हैं कि डायनेमिकली वैल्यू आए. ठीक है, सो वो कैसे आएगी वो हम देखते हैं अब. सो जो भी कोड रहता है हमें JSX का कोड जब भी हमें लिखना रहता है, JS का कोड इनसाइड JS का कोड वी नीड टू wrap it inside curly brackets. Okay, so yeah, now look, now there is a like nodes, like here I'm talking about this nodes. Okay, which we are entering. Okay, and we need to apply map function in this. Okay, and we can call like nodes, and in this way we can pass. Okay, nodes component. Okay, and here I'm going to write title node dot nodes dot, what was the title here, key title and content. Okay, so we can access this in this way, title, and for content we can write notes dot content. In this way. Okay, some error happens. Okay, like it is not rendering. Okay, yeah, like what is the issue with the here, like notes dot map. Okay, and the issue is, just 1 second guys. So basically हम इधर यूज कर रहे हैं props को. Okay, and we need to pass like चेक कर सकते हैं क्या इशू आ रहा है. Okay, props dot title. Okay, okay, item dot create. Okay, like there's some like I think there is a typo issue, so I will like copy
whole thing, like there would be some typo issue. Yeah, so yeah, we can like simply put this structure into this, and बेसिकली हम इधर एक मैप फंक्शन का यूज कर रहे हैं, एंड एज वी ऑल नो दैट मैप फंक्शन इज बेसिकली यूज्ड फॉर कॉलिंग, like it is used to mapping through all the things, like it is kind of like of a loop kind of thing. Okay, so हमारा ये टाइप लाइक प्रॉप्स की मदद से हमने जो भी हमारा node.js में जो भी डाटा था हमने इसको इधर रेंडर करवा दिए हैं through map function, and like we are rendering this whole this component with the like जो भी हमारा nodes में जो भी डाटा है, ठीक है, उसको आप क्या करो, मैप कर दो, और किस कंपोनेंट में मैप करो, इस कंपोनेंट में मैप कर दो, और ठीक है अपन मैप कर रहे हैं, एंड वी आर पासिंग सम वैल्यूज, ठीक है, और वो वैल्यू कैसे पास कर रहे हैं, इधर हमने नोट्स में क्या आगे दो चीजें ऐड करी है, दो यू कैन काइंड लाइक तीन चीजें ऐड करी हैं, टाइटल, कंटेंट and key is basically used to identify every node item uniquely. Okay, so we are using these things, and in the same way, like we are receiving here the props in our node.js file, jsx node.jsx, and here we are renting the whole thing. Yeah, so in this way our props work. Okay, you can see in the whole screen. Okay, so yeah, this is kind of dynamically typed. Okay, yeah, if you have any issue, like you can comment in the chat section. Like our part 2 of the project is completed. Now we are moving towards next next step, which is the state. Okay, so yeah, if you have any doubts, you can ask in the comment section. Difference between Node.js and React.js. Node.js is basically it provides a runtime environment, okay, on which all the modern frameworks like Node.js, React.js and all these things are work. So Node.js basically provides our kind of runtime environment, and Node.js is basically we can say it provides a backend kind of support, okay, and React.js is basically for the front end. Yeah. So I hope कि सबका part 2 complete हो गया होगा या issue आ रहा है. React.js code and share it. Yeah, we'll share the code in the end. Yeah. So props हमारा खत्म हो गया, ठीक है. Like there are some doubts. Okay, how many things we have to create, like header, footer, and note. There are the basically three components, like header, footer, note, or you can like और भी तुम लोग create कर सकते हो according to like creativity दिखा के तुम उस ऐप को और अच्छा better बना सकते हो, ठीक है. I will share the code, like जैसे I will share the code. So next हम move कर रहे हैं state पे, ठीक है. So state topics क्या होता है जावास्क्रिप्ट रिएक्ट में. So basically रिएक्ट में जो भी हमारा कंपोनेंट्स रहता है, ठीक है, उसको कुछ डाटा स्टोर करना रहता है, या it needs to store some data. So for this purpose we are basically using component. Okay, so state component का basically ये use होता है ना, and they are immutables and like a plain objects, है ना, and they are basically plain objects, and इसको हम ऐसा pass down props भी कर सकते हैं, ठीक है. So basically इधर की confusion हो सकता है आप लोगों को कि props और state में क्या difference है basically, ठीक है. So props are like an argument of a function, और states are like a local variables which stores the data of the function. Okay, so basically state क्या करता है, internal communication के लिए manage होता है, and props is basically used for the external communication. जो भी हम आपस में different components के बीच में communication हो रहा है, तो वो होता है props की मदद से. And props are like immutables. We can't change the props, like we can't like do such thing like props ++1 or like this thing, but it is we can do changes in the state part of the React component. Okay, so these are some basic difference. Okay, so now next topic we are going to cover is React hooks. Okay, so React hooks is one of the most like trending like feature which Facebook have recently added to the like in the React code base. Like before the React hooks, there are the child component, there are class components which मैंने पहले बताया था. जैसे दो प्रकार के कोड होते हैं React में, class components and एक functional components. तो क्लास कंपोनेंट में क्या रहता था कि बेसिकली जो भी हम कोड करते थे तो उसके लिए डिफरेंट
पहले से ही कंस्ट्रक्टर्स एंड लाइक डिफरेंट मेथड्स पहले से प्रेजेंट थी, बट फॉर फंक्शनल मेथड्स देयर इज नो सच थिंग. सो रिएक्ट बेसिकली क्या करता था, जो भी क्लास फीचर्स में नहीं है उसको उसमें है, जैसे काइंड ऑफ डिफरेंट प्रकार के हुक्स होते हैं, जैसे काइंड ऑफ यूज स्टेट हुक्स, ओके, एंड like use effect hook and different kinds of hook there. So hooks are very new features and they are introduced in the React 16 version, and after 16 version, before 16 version there are no hooks, there are class component basically there before 16 version. So yeah, and basically it allows to create make the changes in the React state, and we can help us in creating the extensible UI part. Okay, and hooks are the backward compatible, means जो भी applications हमारी बहुत पहले बनी है around 16.8 वर्जन से, सो हम उसके साथ भी इसको यूज कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि ये हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारा जो एक्जिस्टिंग कोड बेस है वो ब्रेक हो जाए कहीं से भी, तो वो वाला इशू नहीं होगा. ठीक है. So now next we come jump to the next topic, use state. Okay, so use state क्या होता है, एक प्रकार का हुक रहता है. ठीक है, जो मैंने अभी बता रहा था कि जैसे 6 different types of hooks present है. ठीक है, जैसे हुआ state, use effect, use construct, and there are 3 different other types of the hooks are present there. Okay, so we are only referring use state due to time constraint, and use state ही बहुत ज्यादा mostly use में आता है. ठीक है, so हम use state को ही देखेंगे. एंड सो देखो, जैसे मैं क्लास कंपोनेंट में क्या रहता था, जब पहले हम क्लास कंपोनेंट्स को यूज करते थे तो उधर हम क्या कंस्ट्रक्टर, सुपर, दिस स्टेट, दिस कीवर्ड एंड ऑल दिस थिंग्स को यूज करना पड़ता था. ठीक है, बट आफ्टर कमिंग दिस कीवर्ड वी हैव टू जस्ट सिंपली इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम द रिएक्ट लाइब्रेरी. ओके, एंड we need to declare this in this way, in this is the syntax. Okay, and we can easily create the things. Okay, so yeah, this is the help use of the React. So let's try to code, and code करने से हमें और ज़्यादा better understanding हो जाएगी इसके state के बारे में. Okay, so yeah, let's try to code. So we can create I will create one new React application in Code Sandbox to understand better about use state property. Okay, okay, so yeah, here we will try to code the React code part. Okay, so इधर मैं use state का फीचर बताता हूँ कैसे यूज होता है. ठीक है, so yeah, here you can create a button. I will create a button which will show the counter of वो काउंट बताएगा कितने टाइम्स मैंने उस बटन को क्लिक किया. So basically वो उस वे में वर्क करेगा. ठीक है, so I will add something in this way. JSX code is terminated. Okay, some issue. Okay, and here we click me. Okay, so हमारा एक इधर बटन है जो बताएगा कि मैंने कितनी बार क्लिक किया इस बटन को. ठीक है, हम अब इसको कैसे काउंट कर सकते हैं, ये हम एक यूज स्टेट के हेल्प से काउंट कर सकते हैं. ठीक है, यूज स्टेट के लिए क्या कर सकते हैं हम, बेसिकली वी नीड टू इंपोर्ट दिस. ओके, सो इंपोर्ट react. Okay, and we also need to import use state feature. Okay, so yeah,
use state feature, yeah, and here I will like declare for the like how many times I have clicked this. Okay, so const there is a like this is the way to declare the state feature in React app. Okay, so this is the way. Okay, use state. Here I have initialized with the 0, like 0 times I have clicked it, and after clicking this, like I will there is a property of set count. Okay, like we can change the state, like इसको हम इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ठीक है, जैसे हमने इसको इनिशियलाइज ऐसा किया, फिर हम एक कोई सा इवेंट कॉल कर सकते हैं. ठीक है, एक इवेंट कॉल होने पे इसमें चेंजेस हो रहा है. सो बेसिकली वी आर यूजिंग यूज स्टेट टू मेक चेंजेस इन आवर रिएक्ट एप्लीकेशन. ठीक है, सो इसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन कॉल करते हैं कि ऑन क्लिक करने पे कुछ फंक्शन कॉल हो. ठीक है, एंड in this way set count and count +1. Okay, yeah, like after clicking this, we can like console log, I can console log the count. Okay, so yeah, after like yeah, we can count this thing. So for console log I can check this. Just 1 second, guys. Okay, on click okay, so why it is not working? Yeah, we can like I can also many times. One second, guys. There's some issue. Undetermined JSX content. Okay. Here we can see that how many times we have count our app. Okay, so here like it is showing the 0 times I have like clicked. Okay, because with the help of this I'm passing currently have 0. Okay, so on clicking this it should get worked. Okay, I don't know actually the reason. Just 1 second, guys, there will be some error. Button dot count. So in like it normally works like how many times we have count, it stores the state of that thing. Okay, it basically stores the data. So use states are basically used to manage and manipulates the state of the React app. Okay, so this is the thing. Okay, so like we want to add some more things to our project, like adding state to the app, and like we need to call this thing. But due to time constraint, I will not like I will share the code repo with you, but due to time constraint I will not like take the whole session because it takes some more time. So yeah, hope like you will understand the whole thing. Okay, you can also deploy this thing like React application, whoever like जैसे जिसने भी कोड से सैंडबॉक्स पे वर्क किया है वो तो डायरेक्टली अपनी एक लिंक पे वर्क देख सकते हैं कि जो भी उन्होंने वेब एप्लीकेशन बनाई है. ठीक है, जिन्होंने VS कोड पे वर्क किया है, ठीक है, वो लोग क्या कर सकते हैं. सो बेसिकली यू कैन आल्सो होस्ट योर वेबसाइट. ठीक है, जैसे जिस पे आप एक लिंक कुछ अपना पोर्टफोलियो बना के या कुछ
क्रिएटिव बना के आप अपना चेक कर सकते हैं। तो वो एक वेबसाइट है नेटलीफाई, जहाँ पे आप जाके डिप्लॉय अपना होस्ट कर सकते हैं अपने वेबसाइट को। जैसे रिएक्ट का कोड वो भी बहुत आसान है, ईजी है होस्ट करने के लिए। सो स्टार्टिंग में मेनी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हमें कैसे हमारा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है। सो मैं वो भी स्टार्ट करके बताता हूँ, ठीक है। सो फॉर स्टार्टिंग वी कैन we can go to our directory structure, ठीक है। दिस इज माय प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर इधर मैंने गया और मैंने रन की कमांड npm start एंड देन it will get started, okay. It will take around 2 to 3 minutes. Till now, we can look for the chat section if you have any doubts. If you have any doubts, you can comment in the chat section. Okay. So yeah, I'm running, this code is running. So yeah. ओके हाँ, जैसे हमने कमांड रन की npm स्टार्ट वाली, ठीक है। तो उसके बाद हमारा एक सर्वर चालू होता है, ठीक है। जो ओके, यू कैन हियर लुक की स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, ठीक है। एक सर्वर स्टार्ट हुआ और उस सर्वर के बाद एक लोकल होस्ट 300 पे लोकली हमारा एक विंडो खुल रही है जिसके ऊपर हम रिएक्ट कोड रन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी के लिए आज के लिए कोड सैंडबॉक्स पे करा, बट VS कोड में थोड़ा timing it takes some time, so to save this time I have directly jumped to the code sandbox, ठीक है। So इस पे अपनी वेब एप्लीकेशन ओपन होगी, है ना। एंड यू कैन इजिली डिप्लॉय द होल वेब एप्लीकेशन, ओके, विद द कमांड आई विल आल्सो टीच हाउ टू होस्ट योर वेब एप्लीकेशन, ठीक है। सो yeah, here our default react app is created, अगर मैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ, ठीक है, काइंड ऑफ तो इस वे में हमारा रिएक्ट ऐप हम रन कर सकते हैं, ठीक है। npm स्टार्ट करके ये भी जो भी हमारा फोल्डर जो भी हमारी विंडो ओपन होती है ये वाला कोड कर सकते हैं। एंड जो भी हमने अभी कोड सैंडबॉक्स में कोड किया है ये सारा, ठीक है, यू कैन आल्सो ट्राई टू रन दिस लोकली, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि इसको हम होस्ट कैसे कर सकते हैं। कोई सी भी रिएक्ट एप्लीकेशन को होस्ट करना बहुत आसान रहता है, ठीक है। कोई सी भी अगर फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैक एंड, अगर सिर्फ फ्रंट एंड एप्लीकेशन है तो इसको आप बहुत ही ईजिली होस्ट भी कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन को। npm बिल्ड के मदद से एक कमांड रहेगी npm बिल्ड। सो npm बिल्ड से क्या रहेगा, आपके पास एक बिल्ड पैकेज आ जाता है, ठीक है। सो बिल्ड पैकेज से आप यू कैन क्रिएट कमांड या अभी हमारे पास ये है, हमारी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अभी ये वाली कमांड रन करने के बाद हमारे पास एक बिल्ड पैकेज भी बन जाएगा, ओके। There would be some type of error. npm run build. With the help of this, a build package would be created. So you can go there and
सो बिल्ड पैकेज करने की कमांड तब तक हम, जब तक ये बिल्ड पैकेज रन हो रहा है तब तक हम क्वेश्चंस ले लेते हैं Q&A में. सो किसी को कुछ भी डाउट्स हैं तो वो दे कैन आस्क इन द चैट सेक्शन. Like if you have any doubts like from starting, like वो मत सोचो कैसा भी डाउट है, बट पूछ लोगे कोई सा भी. So ये वाली कमांड what all we can create using React. Like you can create anything, like any web application or any, like basically React JS is basically used for the learning React, but with the help of React there is one more technology like React Native, which is used for creating the cross platform applications, okay, for mobile applications, like basically. So with the help of React, once you अगर आपने React code सीख लिया, then you can easily learn React Native also. So yeah, with the help of React and React Native you can build web applications and mobile applications as well. So हमारी npm run build वाली command run हो गई है, and तब तक yeah, we can see that there is a build package, ठीक है. Okay, so yeah, this package is ready for our deployment. Okay, so in the next part, our next thing is to deploy this thing in Netlify page. So deploy करने के लिए ज़्यादा हमें कुछ tough process नहीं है. We need to just log in into this, and we have to just drag and drop the package, and in few minutes a link is created where you can run your package. Okay. So I will create Netlify here. So yeah. So हमारा बिल्ड पैकेज रेडी हो गया है. तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ, आपको इस वेबसाइट पे साइन इन करना है, एंड यू कैन इजीली लाइक क्रिएट ऑन ऐड न्यू साइट. एंड डिप्लॉयमेंट का वर्क, डिप्लॉयमेंट इज बेसिकली थोड़ा डिफरेंट रहता है होस्टिंग से. डिप्लॉयमेंट में आपको बैकएंड की चीजें भी आएंगी, तो उसमें आपको डाटाबेस कनेक्टिविटी एंड ऑल दिस थिंग भी करनी पड़ेंगी, डिफरेंट चीजें. तो वो थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस है जो कि हम लोग डे 5 में कवर करने वाले हैं. सो उसमें हम पूरा कंप्लीट होस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट के लिए वो एक डेडिकेटेड सेशन भी है उसमें, along with Node.js. Can we host web page in GitHub? Yeah, you can host with the help of GitHub pages. There is there's a thing of GitHub pages. तो आप उधर जाके होस्ट कर सकते हैं. So there is हमने जो बिल्ड पैकेज बनाया था, ठीक है, इसको इधर जाके बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, एंड आवर वेबसाइट इज रेडी टू होस्ट. इट विल टेक अराउंड 2 or 3 minutes. फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्ट करने के लिए आपको एक बेसिकली पूरा Node.js, अभी फर्स्ट यू नीड टू लर्न Node.js, एंड विद द हेल्प ऑफ राउटिंग एंड डिफरेंट थिंग्स, लाइक यू कैन उसके लिए एक डेडिकेटेड सेशन रहेगा कि आप बैक एंड को फ्रंट एंड से कैसे कनेक्ट करें. एंड बैक एंड के बारे में इंट्रोडक्शन हम डे 5 को ले रहे हैं, ठीक है. सो यू कैन गाइस सी here I have created a web application, this is the default, okay, but here it is not running locally, okay, it is on the website. Okay, you can also लोग ऐसा कर सकते हो कि पोर्टफोलियो अपना बना सकते हो, and you can easily Netlify पे होस्ट कर सकते हो, and you can share among your friends, like I have created such a cool portfolio website in such way, ठीक है. So this is a cool thing, ठीक है. You can also share, it is easily shareable also. So yeah, you can check out this link as well, Netlify पे हमने होस्ट किया है, ठीक है, उस वे में. So that's all from my side. So if you have any doubts regarding React or other technology, if you have any if you feel any doubt
regarding React or anything, like if you need some kind of mentorship or like such thing, you can contact to me on LinkedIn, and you can ask me anything like related to technology, or if you need help related to internship or hackathons, hackathons challenges, coding part. If you need any kind of help, you can like your Nitin Bhaiya would be always be ready to help you out there, and you can contact me on LinkedIn. I will share my LinkedIn profile as well. Okay, so this is my LinkedIn ID. You can check this out as well. Okay. Yeah, you can contact me anytime, like whatever your doubts would be. I would be happy to answer you or help you out there. So that's all from my side. Now over to Shelja. Just 1 second. Please share a roadmap to React. Okay. So React technically roadmap ऐसा सच इतना lengthy process नहीं है. Like today मैंने session type में deliver किया. React technically पहले सबसे पहले prerequisite है कि HTML and CSS आना चाहिए. ठीक है. Then you can like easily learn React. Okay. Just by side. There are enough resource materials are available. I will also share in the group. If you have any doubts, you can ask in the chat section. So that's all from my side. Now over to Shelja. Okay. Bye guys. That's keep learning, keep growing, and keep reaching the heights. Okay. Shelja. Thank you, Nitin, for all the knowledge that you have provided us today. Now it's time to unlock knowledge at the speed of thought with today's fun quiz. So be sure to participate in the quiz. The quiz will be on for 5 to 10 minutes. The link to quiz will be posted in the comment box. The fun quiz will have 7 MCQs. Also, the overall winner of the quizzes will be announced on day 6. For the quiz, please follow the specified name, as only those participants will be with the correct name format will be eligible for the prizes. Format will be name underscore year underscore college. For example, Mohisha underscore 3 underscore AITR. So let's begin.
I would request all the participants to join the quiz fast. And people who will attend the quiz more than once will be disqualified. Now we will be starting the quiz.
I would like to thank you all the audience and members for being here today. It will be our pleasure to meet you all again tomorrow with fourth day of Web Chronicles. Tomorrow we will be having a session on Angular. The link of attendance form is posted in the chat box. So I would request all the participants to fill the attendance form. Also, the link to our social media platforms is posted on the chat box. You all can join our community to get updates about events and workshops and interact with our GDSC team. Till then, stay curious, keep learning, keep growing. Thank you and have a nice day.